I would now request Dr. Hamad Ehsan, CEO of Queen's Medical College, to grace us with a few words. He is the son of a great name in medical fraternity, Dr. Muhammad Ehsan Khan, a cardiothoracic surgeon, and he served humanity at Gulab Devi Hospital, Lahore, as chief administrator for many years. Sir, please. Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much, Dr. Maniza, the Honorable Chief Guest, Professor Khalid Masood Gondal, Vice Chancellor Fatma Jinnah Medical College and Chairman of CSP, Professor Amir Zaman Khan, Director Pahuta, Chairman Mr. Sheikh Abdul Aziz, Executive Director Sheikh Mohammad Enam, Project Director Sheikh Mohammad Azim and Director Sheikh Mohammad Zishan, Principal for Professor Shireen Khavar, Vice Principal Professor Maniza Malik, and MNA Mr. Saad Wasim and Mr. Wasim Akhtar, and last but not the least, Colonel Wajat Saab. Assalamu alaikum. It is a privilege to welcome you to the first White Coat ceremony of Queen's Medical College. Today is a historic milestone, not only in this institution, but for every young woman stepping into the noble profession. The establishment of only medical college for women arose from social realities. In many societies, women were unable to study alongside men, resulting in a shortage of female doctors, limited access to health care for women and children. Such institutions remain vital in reducing barriers, promoting equality, and strengthening healthcare system. They say, somebody said, give me good mothers, I'll give you a good nation. The vision behind Queen's Medical College is inspired by our fathers, for which the company names ILI. There were different thoughts that what should be the name of the company. I suggested it should be ILI. Our fathers, mainly Professor Muhammad Ehsan, Haji Latif Saab and Haji Islam Saab. My late father, Professor Muhammad Ehsan Khan, worked selflessly for 36 years in Gulab Devi Hospital and devoted his life to serve humanity. Haji Latif Saab, father of the chairman Sheikh Muhammad Abdul Aziz and grandfather of project director Sheikh M. Azim, and Haji Islam Saab, father of director Sheikh Muhammad Enam and Sheikh Muhammad Zishan, were distinguished philanthropists whose legacy of service continues through this institution. Queen's Medical College is affiliated with two teaching hospitals, a 300-bedded Ehsan Mumtaz Teaching Hospital and a 250-bedded Bhatti International Hospital, providing strong clinical exposures in a safe and supportive environment. Ehsan Mumtaz Hospital, a teaching hospital, was started in 1994. It's now a tertiary care hospital having more than 20 clinical specialties like cardiac and oncology and so forth, which are headed by highly qualified and experienced senior faculty members. Dear students, I welcome you all, and in Quran Allah says, Hal yastavillazina yalamuna wallazina la yalamun. Are those who know are equal to those who don't know? It demonstrates that a person with knowledge cannot be equal to a person without knowledge. And the Holy Prophet, may peace be upon him, said, whoever follows a path in pursuing of knowledge, Allah makes the path to paradise easy for him. And you are the students are the chosen one. Doctors, I know we can't compare ourselves to the other profession in the sense of financial reasons and other that, but for you, you are the chosen one. Once it happened for me I was doing an Umrah in Makkah and somebody fell down in front of me. And I came and उसको मैंने अच्छी तरह उसको रिससिटेट किया और उसको किया तो बड़ी दुआएं मिली मुझे वहाँ पर. इसी तरह एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था एयरलाइंस में, तो किसी ने आके कहा कोई डॉक्टर अवेलेबल है इधर, तो मैंने जाके उसको रेस्क्यू किया. आप सड़क पे भी जा रहे होते हैं और किसी पेशेंट को रेस्क्यू करते हैं तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है. आप कभी ये ना सोचिएगा कि इस प्रोफेशन में अब शायद उतना फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं है, बाकी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने आपको अपने करीब लाने के लिए ये प्रोफेशन आपके लिए चूज़ किया है. अल्हम्दुलिल्लाह.
आपके वालदैन ने बहुत मेहनत की है कि आप इस स्टेज पे पहुँचें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि उनके लिए क्लैपिंग की जाए, इनके वालदैन के लिए। हाँ जी, इनके लिए ज़्यादा कि ये इन्होंने कितने जतन किए होंगे आपको इस प्रोफेशन में और इस जगह पे पहुँचाने के लिए। उनकी दिन रात की मेहनत होगी, फाइनेंशियल रीजंस के अलावा। किसी ने कहा कि हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन होता है। किसी ने कहा ये जी सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, एमएस है, डीएमएस है। किसी ने कहा डॉक्टर है, किसी ने कहा नर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक किसी ने जवाब दिया कि जी सबसे इम्पोर्टेंट बंदा पेशेंट होता है। अगर आप पेशेंट के लिए काम करें, उसकी दुआएं लें, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जिस तरह इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस बताई कि जिसने इस पाथ पे चला और लोगों की मेरी खिदमत की, उसको अल्लाह ताला जज़ा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कभी आप ये ना सोचिएगा कि इस प्रोफेशन में शायद बिजनेसमैन के मुकाबले में या बाकी और प्रोफेशंस के मुकाबले में इतनी ज़्यादा शायद अब नहीं रही। लोग कहते हैं नहीं इस प्रोफेशन में, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। Patient priority comes the first. We are going to empower extraordinary women to become extraordinary healers. Congratulate and welcome to Queen's Medical College, wishing you a bright and a successful future. Thank you very much.